we can become an expertise of that particular area. Okay, so these are the some qualities or some conditions required for a researcher. Okay, और जो जिन स्टूडेंट को लगता है कि हाँ हम रिसर्चर बनना चाह रहे हैं, ये क्वालिटीज हमें, तो वो बिल्कुल रिसर्च को परसीव करें. अनदर थिंग विच why we shouldn't engage ourselves in research. Okay, उसके क्या फैक्टर्स है. Okay, क्यों हमें रिसर्च नहीं करना चाहिए. ओके, वो भी इंपॉर्टेंट. डू एंड डोंट्स आर इंपॉर्टेंट. हमने डू तो देख लिया, लेकिन डोंट्स भी देखना जरूरी है. सो व्हाट आर डोंट्स. लाइक if you are thinking that you just want to earn a doctorate degree, then don't do research, because research is about knowledge. It is about contribution. Okay, contribution to the existing knowledge system. It is not only to earn degree. Earning degree is important, but it is not only limited to that. Okay, अगर हम ये सोच लें कि हमें सिर्फ डॉक्टर बनना है, इसलिए डॉक्टरेट डिग्री करनी है, तो उसके लिए रिसर्च एक मेन रीजन नहीं हो सकता रिसर्च करने का. Okay, then also do not engage yourself in research if you are not getting motivated. Okay, अगर आप खुद से नहीं करना चाह रहे हो रिसर्च, आपका मन नहीं है, कि आपको लग रहा है कि ये बहुत टायरिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, then don't engage in it. Okay, then and don't think that okay, I will do research, I will get a degree, and then I will get a very good salary in a reputed institution. And to get a good salary and to get appointed in a good institution, I need to do research. Okay, these are the secondary factors. If you gain excellence in your field, अगर आपने उतना excellence अचीव कर लिया अपने रिसर्च में, तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी. Okay, there are no difficulties in getting a good job, okay, of a good salary. Okay, but the first thing is the first thing which is required is you should have excellence in your field. Okay, so these are the things which I believe which are important. And the second is patience. Okay, another important thing which is required is patience. Okay, रिसर्च के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है. क्योंकि अगर आप में वो पेशेंस है, तब आप रिसर्च अच्छे से कर सकते हो. अगर पेशेंस नहीं है, तो थोड़ा बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकते हैं. सो ए रिसर्च रिक्वायर पेशेंस, पैशन, commitment, curiosity to know, and also hard work. Okay, so these are the essential requirements for a research, for a good research. Okay, then careers in research. So which are the options available for research? So the first thing, as I said earlier, कि अगर आपका excellence है, आपने अच्छे से अपना रिसर्च किया है, आपने सच में कुछ एक अपने हार्डवर्क से और अच्छा एक रिसर्च के एक एरिया ऑफ नॉलेज में आप काम कर रहे हो और अच्छा आपका रिसर्च है, तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे. ओके, पहला जो ऑप्शन है जो ऑब्वियसली सबके सामने होता है वो तो एकेडमिक्स है. ओके, एकेडमिक्स में आप इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे कोशिश कर सकते हो. ओके, देन देयर आर इंटरनेशनल. ओके, अब्रॉड में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं. एंड लेट मी टेल यू, other countries they really need good researchers. Okay, they are always looking for a good researchers. If you are a good researcher, you are committed to your research, you will definitely get opportunities in abroad. Abroad means other countries, in Germany, in China, in USA or UK, anywhere. Okay, the only thing is required that you should be committed to your research, you should have patience. Okay, and you should try to get excellence. Okay, then apart from academics, there are various think tanks. Okay, think tanks means there are some organizations which are involved in research activities. Okay, so they are basically looking at various social issues, political issues, other kinds of issues. They are analyzing it, they are publishing reports, documents. Okay, so they have this process. So they require people, they require good researcher. Okay, who will contribute to the organization. So that option is also available.
Then there are other jobs like research assistant, research associate. There are various kinds of research projects. Okay, research projects are taken by various institutions, various organizations, nationally, internationally. Okay, you can apply for it. Okay, so so there are good opportunities in research. Okay, it doesn't mean that there is no opportunity after doing a research. Okay. Then also one more important thing about financial assistance. Okay, so when you are doing research, as I said, it is a time taking process. कि ये थोड़ा सा लंबा समय लगता है, जैसे पीएचडी है, तो पीएचडी के लिए आपको कुछ साल देने पड़ेंगे, 4 साल तो आपको देने पड़ेंगे कम से कम। तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ कई बार ये डिफिकल्टी होती है फाइनेंशियल असिस्टेंस की। ओके, तो उसके लिए भी आप, जैसे यूजीसी है, आपने नाम सुना होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, सो दे दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड various scholarship and fellowships. Okay, so just go to the website of UGC, ugc.ac.in, ये वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप के अंदर बहुत सारे उन्होंने डिटेल्स लिखे हुए, कौन कौन से फेलोशिप अवेलेबल है। ओके, सो दैट यू कैन चेक, और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम कैसे उसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। ओके, और फिर उस फेलोशिप के आधार पे आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है आपके रिसर्च के दौरान। ओके, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी फेलोशिप फ्रॉम द यूजीसी, there are some non-net scholarship, okay, which is provided by universities, central universities. Okay, so they provide some non-net scholarship, which is sufficient to conduct a research. Okay, okay, means it's a kind of minimum amount which is required for conducting a good research. Okay, so financial assistance is also available. Then, okay, so let me talk about some important topic points related to research. कि रिसर्च के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देना, शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहली बात, रिसर्च इज नॉट अबाउट गेटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, रिसर्च का मीनिंग ये नहीं है कि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गूगल पे विकिपीडिया है, या फिर और भी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हमें दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, रिसर्च मीन्स थिंकिंग। Okay, research require 4 important elements. First is thinking, then analyzing, then critical thinking, then curiosity to know. Okay, 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अच्छा रिसर्च करने के लिए। ओके, और अगर आप इस प्रोसेस में जाओगे और इन 4 चीजों को आप फॉलो करने लोगे, आई मस्ट टेल यू दैट यू विल एंजॉय द प्रोसेस। आपको अच्छा लगने लगेगा रिसर्च, अगर आप पैशन के साथ, कमिटमेंट के साथ और एक सिंसियरिटी के साथ अगर रिसर्च करोगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा रिसर्च करते हुए। ओके, यू विल एंजॉय दैट प्रोसेस। ओके, इट इज नॉट काइंड ऑफ बोरिंग प्रोसेस। ये बोरिंग बन सकता है अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट ना हो तो। okay? तो कौन सी 4 चीजें हैं, जैसे थिंकिंग, रिसर्च इज अबाउट थिंकिंग। यू शुड थिंक। ओके, थिंक एंड एनालाइज। इट मीन्स आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन है। ओके, वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, उसके लिए न्यूज़पेपर है, किताबें है, गूगल है। तो उस इंफॉर्मेशन को हमें रिप्रोड्यूस नहीं करना है, मतलब उसी इंफॉर्मेशन को, मतलब सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने, हमने उसको एक साथ जमा करके हमने कुछ लिख दिया, उसे हम रिसर्च नहीं करेंगे, कि उसे हम रिसर्च नहीं कहेंगे। दैट इज नॉट रिसर्च। रिसर्च का मीनिंग है उस इंफॉर्मेशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। ओके, कोई एक इंफॉर्मेशन दी गई है, तो एनालाइज करने का मीनिंग क्या है? वी आर आस्किंग क्वेश्चंस। Okay, we are asking question. If, for example, if this this thing is there, then I will ask the question why. Okay, why question is very important. Okay, we are asking why this is happening, why this is, okay, or basically we are asking questions. And when we are asking questions, then we get research topics, research ideas. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, तब हमें रिसर्च के आइडियाज मिलते हैं। अगर सिर्फ हमने ये कोशिश की कि जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी को पढ़ा और उसी को बस एक जनरल नॉलेज की तरह से दिमाग में लेके चल रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, एक वक्त के बाद एक आपकी मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी है, वो धीरे धीरे जो पुरानी चीजें हम भूलने लग जाते हैं, तो वो आइडियाज दिमाग से धीरे धीरे निकल जाएंगे। ओके, तो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है।
ओके, उसको क्वेश्चन करना है, पूछना है कि ये इन्फॉर्मेशन है तो वो क्यों है। और जब आप क्वेश्चन करने लगोगे, एनालाइज करने लगोगे, थिंकिंग करोगे, सोचोगे, डीप थिंकिंग, सोचना ज़रूरी है। एंड वी आर इन टूडेज वर्ल्ड वी आर नॉट गेटिंग टाइम टू थिंक, वी आर नॉट थिंकिंग। दिस इज अ वेरी क्रूड फैक्ट, बट दिस इज अ फैक्ट। ओके, वी आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू थिंक। ओके, हमारे अगल बगल में ही, हमारे सराउंडिंग में ही, हमारे एरिया में, हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हमारे पूरे इंडिया में, इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें हो रही है, हर दिन हो रही है। ओके, हमारे पास इतने सारे इश्यूज है, इतने सारे हैपनिंग्स है, बट वी डू नॉट थिंक अबाउट देम। ओके, वी नॉट एनालाइज देम। ओके, तो हम सोचेंगे नहीं, उन्हें समझेंगे नहीं, तब तक हमें वो रिसर्च करने का एक मोटिवेशन नहीं आएगा। ओके, सो थिंकिंग एंड एनालाइजिंग इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटेड टू एनालाइजिंग कि क्वेश्चंस पूछना है। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करनी है जो बताई जा रही है। ओके, वी शुड आस्क क्वेश्चंस। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। देन ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी टू नो, कि चीज़ों को जानना, चीज़ों को समझना, कोई नई चीज़ को जानना, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और सिर्फ जानना नहीं, तो वो चीज़ रिसर्च के थ्रू जो कंक्लूजन आपका होगा उससे दूसरे लोगों को भी बताना। ओके, सो दैट क्यूरियोसिटी शुड बी देयर। देन हाँ, there is another important point that there is a difference between academic writing and journalistic writing. कई बार ये हमसे गलती हो जाती है, जो भी रिसर्चर्स हैं, कि हम रिसर्च करते हुए हम लोग एकेडमिक्स राइटिंग जो होती है उसको छोड़ के हम थोड़े जर्नलिस्टिक राइटिंग की तरफ जाते हैं। जर्नलिस्टिक राइटिंग मीन्स वेयर वी आर पासिंग जजमेंट्स। ओके, जर्नलिस्टिक राइटिंग जो जर्नलिज्म में जो यूज़ किए जाते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। ओके, इट हैज़ इम्पोर्टेंस बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एकेडमिक में जब हम रिसर्च करते हैं तो उसका एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि उसकी राइटिंग अलग है। उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, साउंड आर्ग्यूमेंट देते हैं, क्योंकि हम कुछ एक बात कहते हैं, हम कुछ तर्क देते हैं, and it is based on some research, some methods. Okay, so this is very important thing, that while doing research and while arguing something, we should understand that we should not pass judgments, कि judgments में नहीं जाना है हमें कि क्या सही है क्या गलत है। we are not here to pass judgment, but we are here to analyze the fact. Okay, we are here to argue. हम यहाँ पे कुछ argue करने के लिए आए हैं, कुछ analyze करने आए हैं। Okay, then one thing which is very interesting and very uh, I like about social science is doing research in social science is a very beautiful process. Why? I tell you, because see, in social science, I believe that there is nothing true or false, कि यही सच है, यही ट्रुथ है और यही गलत है। ओके, जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स है, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, देयर यू हैव एग्जैक्ट फैक्ट। ओके, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट फैक्ट मिलेंगे। ओके, 2 + 2 इज 4, इट कैनॉट बी 5, इट कैनॉट बी 6, राइट। तो वहाँ पे एग्जैक्ट फैक्ट है। ओके, वहाँ पे प्रिसिशन है। इन सोशल साइंस वी हैव दैट लिबर्टी। ओके, कि हम सोशल इश्यूज को डील करते हैं, और एक सोशल इश्यूज पे मल्टीपल ओपिनियंस हो सकते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी का इशू है, देन देयर विल बी मल्टीपल interpretations, multiple opinions on particular issue, and that is the beauty of social science. Okay, कि एक ही इश्यू के बारे में हमें बहुत सारे पहलू पता चलते हैं, बहुत सारे उसके एस्पेक्ट हमें पता चलते हैं। ओके, समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन आइडियोलॉजी एंड आवर आइडिया। ओके, उसके तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। ओके, बट बाय एनालाइजिंग particular issue from multiple point of view, we are actually enhancing the knowledge system. Okay, this is my belief, कि एक इशू के बारे में जब हम अलग अलग मल्टीपल साइड रखते हैं तो वो नॉलेज सिस्टम को एनहांस ही करता है। और सोशल साइंस में ये एक ब्यूटी है, कि उसका एक प्लस पॉइंट है, इट इज अ बेनिफिट ऑफ सोशल साइंस। देन
in in sciences, okay, but and they are more scientific because they use experiment, they use lab. What about social sciences? We don't have any lab, we do not conduct any experiments. Then there is a question that कि social science में research करना कितना authentic होता है, कितना scientific होता है, okay, ये question पूछा जाता है. तो social sciences में research जो हम करते हैं उसमें हम लोग कई सारे methods use करते हैं, okay, वो methods साइंस स्ट्रीम की तरह नहीं होते, बट इट मीन्स दैट अगर हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं, कोई इशूज को पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ उसे पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ रहे, वी यूज सम सिस्टमैटिक मेथड्स, कि उसे रिसर्च मेथोडोलॉजी कहा जाता है. ओके, रिसर्च में हम अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं किसी एक इशू को अनकवर करने के लिए. ओके, सो इन दैट वे वी कैन से सोशल साइंसेस कंडक्ट रिसर्च सिस्टमैटिकली. सोशल साइंस में हम भले ही सोशल इश्यूज को लेकर या फिर दूसरे इश्यूज को लेकर हम बात करते हैं, बट दैट इज सिस्टमैटिक स्टडी. देन another important thing, when you are doing, if you want to do a research, okay, then you can make use of your existing knowledge. जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, उसका यूटिलाइज कर सकते हो आप रिसर्च के लिए. क्योंकि फॉर एग्जांपल रिसर्च किया जाता है जैसे किसी पर्टिकुलर इशू पे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर इशू पे हम लोग कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में रिसर्च कर रहे हैं. तो अगर मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ तो फिर मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कि जो एरिया है जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, उन लोगों के बारे में जानता हूँ, उनकी लैंग्वेज जानता हूँ, उनके डायलेक्ट जानता हूँ, ओके, आई नो देयर सिस्टम. ओके, तो वहाँ पे रिसर्च करने से मुझे एक एडवांटेज होगा. क्या एडवांटेज हुआ कि मुझे उस सिस्टम के बारे में पता है, वहाँ की लैंग्वेज पता है. व्हेन आई एम इंटरैक्टिंग विद द पीपल, आई कैन इंटरैक्ट देम विद ईजनेस. इजीली मैं उनसे इंटरैक्ट कर सकता हूँ. वो चीज़ें हमें पता चलेगी जब हम फील्ड वर्क करते हैं. रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फील्ड वर्क. ओके, फील्ड वर्क मतलब जहाँ पे हम सिर्फ किसी एक लाइब्रेरी में बैठ के या फिर किसी कमरे में बैठ के पढ़ते नहीं है. वी आर एक्चुअली गोइंग टू द ग्राउंड, वी आर एक्चुअली गोइंग टू द फील्ड, वी हैव क्वेश्चन आर, समटाइम्स वी आस्क क्वेश्चंस, हम लोगों से बातचीत करते हैं, कई बार कुछ सोशल एक्टिविस्ट लीडर उनसे इंटरैक्ट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को कि ग्राउंड में क्या हो रहा है. ओके, और उसके आधार पे, उसके बेसिस पे हम अपने रिसर्च में उसे इंक्लूड करते हैं कि मैंने अब ये सारी चीज़ें देखी ग्राउंड पे और उसको मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूँ, और उसको कनेक्ट करना है थियोरीज से. और थियोरीज आप लोगों को बैचलर्स में पढ़ाई जाती है, मास्टर्स में पढ़ाई जाती है. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे सब्जेक्ट की वो क्लियर हो. ओके, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो, जो हम अंडर ग्रेजुएट्स में पढ़ते हैं. ओके, जब मैं भी अभिनव कॉलेज में था, सो all the faculties were they were making various concepts clear to us. Okay, तो फिर उसके बाद जैसे if I talk about my personal journey, okay, तो जैसे बीए में हम लोग थे, अभिनव कॉलेज में थे, तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हुए जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको पढ़ते थे, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होती थी. उसके बाद जब हम एमए में आए, जब मैं एमए में आया यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, वहाँ पे थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे आ गया. मतलब हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थे अलग अलग कंसेप्ट की वो क्लियर हुई. अब उसके बाद में हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ने लगे, क्योंकि वी ट्राई टू एंगेज आवर सेल्फ इन कंटेम्प्रेरी डिबेट्स कि कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स कौन से हैं, आज के समय में कौन कौन से ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो किन किताबों पे काम कर रहे हैं, उनके थीम्स क्या है, उनके सब्जेक्ट्स क्या है, ओके, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनके बारे में पढ़ने लगे, स्पेसिफिक किताबें पढ़ने लगे. पहले बीए तक हम लोग जनरल किताबें पढ़ते थे, जो इंपॉर्टेंट किताबें होती थी. एमए में आकर हम थोड़े स्पेसिफिक किताबें पढ़ने लगे, अलग अलग ऑथर के स्पेसिफिक इश्यूज पे, स्पेसिफिक थीम के बारे में जो किताबें थी वो पढ़ने लगे. ओके, एंड वी वर ट्राइंग टू एंगेज थ्योरेटिकली, थोड़ा डीप सोचने लगे मास्टर्स में. ओके, देन व्हेन आई केम टू दिल्ली for MPhil research. So MPhil is Master of Philosophy. It is basically a kind of training, research training. Okay,
वहाँ पे हमें बेसिक्स पता चलते कि रिसर्च कैसे करते हैं. So MPhil teach you how to conduct research. Training कि how can we conduct a research on particular topic, particular issue. उसमें से कुछ एमफिल के सब्जेक्ट ऐसे होते थे जो जिनमें स्कोप ज़्यादा हुआ करता था कि ये इश्यूज जो है ये अब तक अनकवर्ड है, अनडिस्कवर्ड है, तो इनको फिर कुछ स्टूडेंट उस टॉपिक को पुश करते थे फर्दर पीएचडी स्टडीज के लिए, उसे वो कंटिन्यू करते थे आगे. ओके. और कुछ स्टूडेंट्स फिर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्हें लगता था कि एमफिल में ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हमने अभी जो काम किया है उसके ऊपर ऑलरेडी अभी बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अभी हमें इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ टॉपिक चेंज करना है, तो वो भी वो कर सकते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम टोटली एक फील्ड से छोड़ के दूसरे फील्ड में जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग माई रिसर्च इन कास्ट स्टडीज. सो कास्ट स्टडीज से डायरेक्टली आई कैनॉट जम्प टू द totally different concepts, okay, like for example judiciary or some other marxism or anything. Okay, तो उसी से रिलेटेड उसमें से एक कोई चेंज करके या फिर उससे रिलेटेड टॉपिक हम चूज करते हैं. ओके, डिपेंड्स ऑन रिसर्च स्कॉलर. तो पहले एमफिल हुआ करता था, एमफिल वाज इंटीग्रेटेड. ओके, जब जेएनयू में हमने एमफिल किया था तो वी हैव टू डू एमफिल बिकॉज इट वाज इंटीग्रेटेड कोर्स. ओके, एमफिल के साथ ये जुड़ा हुआ था. ओके, तो एमफिल के साथ हमें पीएचडी भी करना था. बट नाउ यू हैव चॉइसेस. ओके, पहले भी चॉइसेस थे, ऐसा नहीं है. तो एमए के बाद भी आप डायरेक्टली भी पीएचडी कर सकते हो. ओके, देयर इज नो नीड टू डू एमफिल, यू कैन डायरेक्टली डू पीएचडी. सबसे पहले आप क्या करो कि आइडेंटिफाई some best universities of India and if possible best universities of abroad. आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, कौन से बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि जहाँ पे अच्छी रिसर्च होती है, उनको आइडेंटिफाई करो. फिर उनके वेबसाइट पे जाके उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि उनका सिस्टम कैसे है, वो कैसे काम करते हैं, उनका कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है. ओके, तो उनके बारे में देखो, थोड़ा सा चेक करो उनके बारे में इंफॉर्मेशन. देन देन प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ताकि उनके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए प्रिपेयर कीजिए. और जो एंट्रेंस के जो एग्जामिनेशन होते हैं दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि जो आपने एमए में पढ़ा हुआ है, मास्टर्स में पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड ही एमए के जो पीएचडी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसी से रिलेटेड होते हैं. कुछ ऐसे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट, कुछ अलग से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा. एंड बेसिकली इट इज़ अबाउट रिसर्च प्रपोजल. ओके, रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है. रिसर्च प्रपोजल मीन्स you are intended to do your research on some topic, so you prepared a draft. एक प्रपोजल है कि मैं ये इस टॉपिक पे रिसर्च कर सकता हूँ. ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रपोजल. जरूरी नहीं कि वही फाइनलाइज होगा, वही सेम टॉपिक होगा, बट इट इज अ काइंड ऑफ इनिशियल स्टेज. इट इज इनिशियल स्टेज, वहाँ पे आप खुद से सोच के प्रपोज करते हो एक रिसर्च टॉपिक. ओके, देन देर इज एट एडमिशन्स के वक्त डायरेक्ट पीएचडी में आपके वाइवा होता है, इंटरव्यूज होते हैं. उसमें फिर जो कमिटी होती है दे आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर रिसर्च प्रपोजल. ओके, and then there will be selection. Okay, so first identify the good universities, okay, and check their websites if you really want to do research. Okay. So that is one thing. Nitin sir, how much time do I have? Kiran, you can go for another 15-20 minutes because we lost some time in between. Okay, So, yeah, great sir. please carry on for 15 minutes. Thank you. So I believe students are understanding whatever I am saying. Okay, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है. ओके, दीज आर वेरी, रिसर्च इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. Okay, it is, if you see it simply, okay, then you will enjoy research. Okay, conducting research. Okay, so next thing which I can discuss is
Yes. So one more important thing, if you are entering into research, if you want to do a research, you can continue that practice even after completing your PhD. PhD होने के बाद भी, आपको डिग्री मिलने के बाद भी, आप अपने टॉपिक को, अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हो. ओके, बिकॉज एनी टॉपिक इज नॉट स्टैटिक. ओके, पीएचडी करना मतलब ये नहीं कि आपने कोई एक अल्टीमेट कुछ एक आर्गुमेंट दे दिया, एक ट्रुथ दे दिया और वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया. ओके, ऐसा नहीं है. देर आर ऑलवेज डेवलपमेंट्स. ओके, ऑलवेज कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, डेवलपमेंट्स होते रहते हैं. सो इफ यू आर an expert in particular area, for example you are expert in feminism, suppose. ओके, और आपने फेमिनिस्ट फिलोसॉफी पे या फिर फेमिनिस्ट थियोरी पे कोई एक अच्छा सा थीसिस लिखा हुआ है किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर. ओके, फेमिनिज्म इज अ वेरी इज अ ब्रॉडर थीम, बट उसी से रिलेटेड आपने नैरो डाउन किया टॉपिक को और उसको लेकर आपने पीएचडी की अपनी थीसिस लिखी है. ओके, सो आपके पीएचडी के थीसिस लिखने के बाद, उसके कंप्लीशन होने के बाद भी उस टॉपिक से रिलेटेड आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो. ओके, आप अपने रिसर्च पेपर्स बना सकते हो, रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट कर सकते हो. देयर आर वेरियस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, अलग अलग यूनिवर्सिटी में कंटिन्यूसली रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. ओके, इट इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी. उसमें क्या होता है कि यू आर कमिंग अप विथ ए पर्टिकुलर research idea, you are sharing your research, there are other participants also, they are also sharing their research, and there is a good deliberation, there is a good debate. Okay, so you get an opportunity to share your research अगर आप ये conferences या फिर seminars वगैरह attend करते हो तो. Okay, so that practice you can continue even after completing PhD. In fact, PhD के दौरान भी आप ये activity कर सकते हो. Okay, so it will keep you uh, uh, updated. Okay, you will know which are the other universities, what is happening with the what is happening in what is happening internationally, who are the scholars. Okay, internationally known scholar or Indian scholars, what are their ideas. Okay, what are they studying, what are their expertise. Okay, तो वो सारी चीजें हमें पता चलती है. प्लस in seminars, in conferences, you talk, you get an opportunity to communicate with them. हमें interact करने मिलता है. ओके, सो उस इंटरेक्शन में भी बहुत सारी चीजें पता चलती है. रिसर्च इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग बुक्स. ओके, लेट मी क्लियर दिस. अब तक ग्रेजुएशन तक हमारा ये अप्रोच था कि हमें एग्जामिनेशन आ रहे हैं, हमें पढ़ना है और फिर एग्जामिनेशन देने. रिसर्च में कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कोई इसमें परीक्षा नहीं देनी है. ओके, इट इज नॉट अबाउट एग्जाम. ओके, इट इज अबाउट योर स्टडी. ओके, योर स्टडी, देन it is about interaction also. You are interacting with the people, you are interacting with common people, you are interacting with some social activists, some political party workers, or some your colleagues, your friends, your fellow researchers. Okay, so it is about interaction, it is about communication. Okay, research में आपको किताबों से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा. किताबें तो पढ़नी है, you need to read books. Okay, you don't have any other alternative that you need to do, but apart from that you need to communicate, you need to interact. और ये अच्छी चीज भी है. Okay, it is very helpful for our personality. Okay, because we are interacting with other people, we are not just limiting ourselves to reading books. अगर आप एक अच्छे रिसर्चर हो तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बनोगे, आप एक अच्छे इंटरैक्ट करने वाले इंसान भी बनोगे. Okay, because you, without communication, without interaction, you cannot do a research, you cannot conduct a research. Okay, then yes, supervisor also. Okay, so in when you are conducting a research, you cannot do a research without guidance of expert professor. Okay, so there will always be a supervisor, which is sometimes called as guide. Okay, so that your supervisor always guide you. Okay, he always guides you
to what to do. Okay, which books are available, which books we can read. Okay, which research methodology we can use. Okay, how to conduct our research. Okay, how to conduct our research. So we get guidance from our supervisor is also important. Okay, and we need to communicate with our supervisor. Okay, because we should have a good discussion, a good deliberation on our topic, on our research topic. Okay, for that you need to have a good interaction with your supervisor, a good communication. Okay, so that you get various ideas. Okay, you get various uh, you get ideas how to conduct a good research. Okay, so that is also required. Then okay, so there is one more thing. I don't know I should talk about it or not, because it will take another session, but I can uh, share this with you in a very brief, in a brief manner. That is how to conduct a research, means what are the process of conducting a research. Okay, it requires a detailed session, but I can just share you briefly. Okay, कि कैसे रिसर्च करने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, कैसे हम रिसर्च करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं. ओके, तो जैसे सबसे पहला जब हमने किसी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. ओके, एडमिशन लेने के बाद यू हैव ऑलरेडी हैव सम आइडिया, यू हैव योर रिसर्च प्रपोजल. ओके, यू हैव सम टेंटेटिव टॉपिक विथ यू. ओके, तो पहले सबसे पहले तो हमें सिलेक्ट करना होता है कि हमारा एरिया ऑफ रिसर्च क्या होगा, व्हाट विल बी आवर रिसर्च टॉपिक. ओके, क्योंकि इतने एज आई सेड वी कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी एरिया. वी कैन हैव नॉलेज अबाउट वेरियस इश्यूज, वेरियस कॉन्सेप्ट, लेकिन हम उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते. हर चीज़ हमें नहीं पता होगी, बेसिक्स उसके पता होगी, लेकिन उसमें हम एक्सपर्ट नहीं होंगे. तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस एरिया, रिसर्च एरिया पे काम करना चाह रहा हूँ. सो इट कैन बी ए कास्ट स्टडीज, इट कैन बी फेमिनिज्म, it can be issues related to racism, it can be about poverty. Okay, it can be about religion, communalism. Okay, or any other ideology or any other particular social issue. Okay, तो आपको एरिया सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले, मैं किस पे काम करना चाह रहा हूँ. ओके, तो आपने पहले अपना एक रिसर्च एरिया डिसाइड किया, फिर उसके बाद रिसर्च टॉपिक डिसाइड किया. Okay, I can remember one thing, when I was doing classes during my MPhil, one of our professors said in our we were at the initial stage of researcher. तो उस समय हम बहुत पहले स्टेज पे थे रिसर्च जब कर रहे थे. तो उन्होंने ये कहा था कि आप एक काम करो, लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में जाके वहाँ देखो जो किताबें होते हैं, अलग अलग सेक्शन में होते हैं वहाँ पे किताबें. ओके, कुछ कास्ट इश्यूज पे अलग से सेक्शन होगा, रिलीजन के ऊपर अलग से सेक्शन होगा, पॉलिटिकल साइंस के स्पेसिफिक किताबों के ऊपर अलग से सेक्शंस बने होंगे. So he said that you go to the library, visit these various sections, and just think in future if you want to become a good if you want to become a good researcher, what do you think your thesis or your published book, where your book will be located in which section. आप क्या सोचोगे कि आपकी किताब किस सेक्शन में होगी. So it will define your research area. Okay, it means that we are thinking that मुझे इस एरिया का एक्सपर्टीज बनना है, मुझे इस एरिया को एक्सप्लोर करना है डिटेल में, इसमें इस एरिया के बारे में मुझे पढ़ना है. ओके, सो you are deciding before that what is your research area, what will be your research area. Okay, then you, after selecting your research topic or research area, you can talk about objectives. Objective, research objective, it means what are your research questions. रिसर्च करना है तो कुछ क्वेश्चंस होंगे. ओके, इट इज लाइक एन क्वेश्चन एंड आंसर, देयर आर सम क्वेश्चंस और उसके आंसर हम अपने रिसर्च के जरिए ढूंढते हैं. ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कि रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा रिसर्च जो होगा वो किन क्वेश्चंस को डील करेगा.
ओके। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपके होंगे कि आप बताओगे कि ये मेरा रिसर्च एरिया और इसमें ये क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, जिनको मैं अनकवर करना चाह रहा हूँ, जिनको मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। ओके, सो यू विल आइडेंटिफाई योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, योर रिसर्च क्वेश्चंस। ओके, then next stage will be research hypothesis. Research hypothesis means your specific prediction about what you expect to happen in study. Okay, करने वाले हो तो उसका उस रिसर्च से क्या आउटकम निकलेगा, क्या आर्गुमेंट हो सकता है, क्या आउटकम हो सकता है। ओके, ऑब्वियसली दिस इज टेंटेटिव, जरूरी नहीं है कि वही आर्गुमेंट हो, वही आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो शुरुआत में वही आपका फाइंडिंग हो आपकी रिसर्च का। ओके, जब आप रिसर्च मेथड का यूज करोगे, अपनी रिसर्च करोगे, तो शायद आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि शायद ये आर्गुमेंट हो सकता है या फिर ये चीज हो सकती है, वो शायद ना हो। ओके, योर हाइपोथेसिस कैन बी फॉल्स। ओके, वो शायद गलत भी हो सकता है, बट एटलीस्ट योर हाइपोथेसिस मीन्स यू आर डायरेक्टिंग योर रिसर्च टू समथिंग। कि कहीं ना कहीं आप कुछ एक्सपेक्ट करो कि मेरा रिसर्च यहाँ शायद ये एक्सप्लोर करेगा चीजें। ओके, देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च, रिसर्च का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथड्स। ओके, क्योंकि आप अगर आपने रिसर्च टॉपिक को भी चूज कर लिया, रिसर्च क्वेश्चंस को चूज कर लिया, लेकिन रिसर्च करना कैसे है। ओके, हाउ टू कंडक्ट ए रिसर्च, व्हाट विल बी द मेथड्स यूज्ड बाय रिसर्चर टू कंडक्ट हिज रिसर्च। ओके, तो मेथड्स के ऊपर तो मेथड्स के ऊपर भी एक अलग से एक सेशन हो सकता है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देयर आर वेरियस रिसर्च मेथोडोलॉजीज के अलग अलग तरीके होते हैं रिसर्च करने के। रिसर्च सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने लाइब्रेरी में बैठे रहे, किताबें पढ़ी और उसी से हमने फिर अपना आर्ग्यूमेंट लिख दिया और अपना रिसर्च हो गया। ओके, तो उसके तरीके हैं। ओके, अगर किताबें भी पढ़ रहे हैं तो उसका भी एक तरीका है कि कैसे पढ़ना है। ओके, और रिसर्च थ्योरेटिकली भी होता है, मतलब उसे क्वालिटेटिव कहा जाता है। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है जिसमें हम बहुत सारे स्कॉलर्स को पढ़ते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं। एंड there is quantitative research also. Quantitative means we are collecting data. Okay, we are going to field, we are conducting research survey. Okay, we are asking questions to people, our target people, and then we are collecting that fact, that information, and we are analyzing them. उसको प्रोसेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और उस डेटा जो हमें मिला है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, उसको उसको एनालाइज करते हुए अपना आर्गुमेंट बनाते हैं। सो दैट कैन बी अनदर वे, क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, तो मेथड्स हैं, अलग अलग प्रकार के रिसर्च मेथड जिस जो आपको बताएगा कि आपको रिसर्च कैसे करना है, कौन से मेथड्स होगा, किस तरीके से रिसर्च करना है। ओके, एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी रिसर्च। ओके, जितनी ज़्यादा आपकी रिसर्च मेथड्स क्लियर होंगे और अच्छे से आप उसे अप्लाई करोगे, आपकी रिसर्च उतनी बेहतर होगी। ओके, देन उसके बाद का प्रोसेस होता है कि चैप्टर्स लिखने हैं। ओके, चैप्टर्स मीन्स हम कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे रिसर्च को। ओके, रिसर्च को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कहाँ से मुझे शुरुआत करनी है, जो लिखना है रिसर्च को कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ पे खत्म करनी है, उसको कैसे डिवाइड करने है रिसर्च को, कि शुरुआत के फर्स्ट चैप्टर में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा। सो you have to organize your research. Okay, so therefore you are writing chapters. Okay, अलग अलग chapters होते हैं और उसमें फिर उसका रिसर्च आपका उसमें दिखता है। और हर चैप्टर्स जो चैप्टर्स होते हैं, इट इज नॉट डिस्क्रिप्टिव। ओके, जब रिसर्च में आप जब जैसे पीएचडी कर रहे हो, उसमें जब आपको थीसिस लिखना होता है तो उसमें चैप्टर्स होते हैं। तो चैप्टर्स में हम हर एक चैप्टर में इंफॉर्मेशन नहीं देते, जानकारी नहीं देते, जनरल नॉलेज नहीं देते। वी आर गिविंग आर्ग्यूमेंट इन ईच एंड एवरी चैप्टर। हर चैप्टर में आप अपना एक खुद का आर्ग्यूमेंट देते हो। इस चैप्टर में ये मैंने चीजें आपको बताई है, तो उसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है। सो ईच चैप्टर विल हैव स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट। हर चैप्टर का एक आर्ग्यूमेंट होगा। मोस्टली व्हाट हैपन, जो हमेशा पहला जो चैप्टर होता है रिसर्च का, दैट इज ऑलवेज हिस्टोरिकल। हमेशा
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर में, फिर सेकंड चैप्टर से डायरेक्टली हमें टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बट अगर हिस्ट्री के ऊपर भी अगर हम चैप्टर लिख रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी चैप्टर लिख रहे हैं, दैट शुड ऑल्सो हैव सम आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब आपका क्या कहना है उसमें। आप अगर उस चैप्टर में लिखोगे 4 स्कॉलर को मैंने पढ़ा, उनकी 4 किताबें पढ़ी, उन्होंने ये 4 बातें जो जो टॉपिक में पढ़ रहा हूँ उसके बारे में ये लिखा हुआ है, तो आपका काम वहाँ पे खत्म नहीं होता। आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी है, आपको अपना आर्गुमेंट देना। आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि 4 स्कॉलर्स ने अगर 4 बातें कही एक इश्यूज के बारे में, तो उनमें डिफरेंस क्या है, कि अलग अलग क्यों है आर्गुमेंट्स, और इन सब आर्गुमेंट्स में आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या आर्गुमेंट है। और सिर्फ उसे लिखना नहीं है, तो उसे जस्टिफाई भी करना है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आपका आर्गुमेंट ऐसा क्यों है। ओके, सो एवरी चैप्टर विल हैव आर्गुमेंट, और लास्ट में होगा आपका रिसर्च का पार्ट होगा कंक्लूजन, जिसमें आप अपने फाइंडिंग्स बताते हो रिसर्च की। मतलब आपने शुरुआत की थी कि रिसर्च क्वेश्चन से, मेरा रिसर्च कौन कौन से होंगे, मुझे किन क्वेश्चंस पे रिसर्च करना है, एंड एट लास्ट यू विल हैव योर फाइंडिंग्स। You will tell that after doing research, these are my findings. Okay, so these are my conclusions. Okay, so this is the means very briefly I told you the process of conducting research, कि वो procedure क्या होता है research conduct करने का। इसमें भी बहुत सारे details है, बहुत सारी चीजें होती है, but I cannot discuss all of them. Okay, now the last thing, and then I will I think I can stop. That is yeah, so last word or last sentence about the research which I want to share, that is, see, research is very simple. Okay, there are two things, okay, which is required for research. First is your subject's theoretical understanding. If you are a political science student, okay, then you should have your the theoretical understanding of the subject. Theoretical objects understanding means you should know what are the concepts. ओके, हम जब पॉलिटिकल साइंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, जैसे जस्टिस है, राइट्स है, इक्वालिटी है, ओके, डेमोक्रेसी है, इन कंसेप्ट को हमें सबसे पहले पढ़ना है। ओके, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, बेसिक्स क्लियर करने हैं। अगर हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं तो हमारी रिसर्च अच्छी नहीं होगी। इसलिए आपका ग्रेजुएशन की स्टडीज और आपकी एमए की स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं अपने। Okay, so you should clear your basic understanding, and second thing, you should have your you should analyze the contemporary situation, what is happening in the world, what is happening in your area, in your locality, what is happening in your state. Okay, contemporary क्या हो रहा है, okay, क्या कौन कौन से टॉपिक्स हो रहे हैं, कौन कौन से इश्यूज हो रहे हैं, तो उन इश्यूज को भी लेना है, और उसको फिर अपनी जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपने जो आपकी जो बनी है, आपने जो समझा है, यू नीड टू कनेक्ट देम, और उसको कनेक्ट करने के लिए आप रिसर्च करते हो। जब आप दोनों चीजों को कनेक्ट करोगे, देन यू विल हैव अ गुड रिसर्च। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, आई हैव टॉक्ड a lot. I hope you understood at least some points about the research. So thank you very much, all of you. Yeah, thank you, Kiran. That was Dr. Kiran. You have given an interesting talk on research, and as we were discussing that, it is in a very simple language that we are trying to convey this topic, and I think you did justice to what we had set out uh, for this program. So now let us look at the questions. I think we have one question in YouTube, and we have another question uh, which will be uh, which will be via Zoom directly to me. So I'm reading out the first question by Nikita Mishra. She has typed in the chat box. She's saying, as per all other subjects and studies, we have to pay fees. But for research, is there any cost? And then she's also typing what kind of jobs we will get.
She's also saying for beginning research, which topic we should choose. Basically, these are three questions from Nikita Mishra. Uh, you would like to take another question before responding, or you want to respond to this one first, Dr. I Kiran? can take another question. I can Okay. take another question. So Niharika is on. Yeah, Niharika, go ahead and ask your question. Hello, sir. I have a question that how journalism or articles appear in newspaper or magazine is different from research paper. Can you explain more details that differ from uh, research? Okay. Okay. Thank you very much for the questions. So I can discuss these two questions first. So first regarding the fees, yes, of course there are some fees. Okay, if you are doing PhD and if you're doing MPhil, of course there are fees. It depends on the nature of institution. Okay, if it's a central university, state university, or any private university, so it depends on the institution. Okay, so they have their this fee structure. Okay, there are some correspondence courses also. Okay, they, for example, IGNU, it also conduct PhD also. So they have their different fee structure. Then jobs, I told you about the jobs. So the first job which is means which is very connected to research is academic. Why? Because academic is very much connected to research. Okay, so you can find job in academics in not only in India but in abroad also. Okay, in other countries. Okay, you just need to search. Okay, you need to search the websites of various universities, various colleges, and wherever there are opportunities you can apply. So academics is the one option. Then there are various positions. Okay, there are various positions like research assistant, research associate. Okay, then there are various research projects conducted by various institutions or various intellectuals. So you can be part of various research projects. Okay. So that is one thing. Then there are various think tanks. Okay, these think tanks are basically some organizations which are working on particular issues. Okay, social issue or political issues. So you can also be part of those think tanks, these organizations. Okay, and as I said, there are ample opportunities in other countries. Okay, other countries need good and sincere research scholars. Okay, because they want to know more about India or India's social conditions, political conditions, and that too in particular areas. Okay, in particular cities or particular means they want to know about the local issues. Okay, so they are providing ample opportunities for the researchers. So that is also there. Then which topic to choose? See, as I said, don't take don't choose topics according to the means the topic should not be fashionable. It means that चलो आजकल डेमोक्रेसी के बारे में बहुत बात हो रही है तो आई शुड वर्क ऑन डेमोक्रेसी. कास्ट इशू पे बात हो रही है तो मैं कास्ट के इशू के ऊपर काम करूंगी. Okay, don't take those topics, don't go with the trend. Okay, see what is your interest. Okay, what do you want to select. Okay, what do you want to work. Okay, कौन सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि ये एरिया मुझे करना है इसके बाद, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ाई की है बीए में और एमए में. सो यू नो वेरियस कॉन्सेप्ट्स. So based on those concepts, there may be some issues, there may be some concepts which are interesting for you, which you want to learn more. Okay, so select those topics. Okay, which interest you. Otherwise what happens sometimes, कई बार होता है, कई बार रिसर्चर्स कुछ ऐसे टॉपिक्स ले लेते हैं जो उन्हें जरूरी नहीं कि उन्हें उतना अच्छा लगता है या फिर उतना उनको उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन वो दे गो बाय द ट्रेंड कि चलो ये ज्यादा ट्रेंडी टॉपिक है तो इसके ऊपर कर लेते हैं, फिर बाद में उस प्रोसेस में फिर वो उसको अच्छे से कर नहीं पाते. Okay, so that is another thing. Then journalistic writing and academic writing. See, uh, in journalism also there are research is conducted in journalism also. Okay, I am not saying that there is no research in journalism. Take the example of P Sainath. Okay, he's a very good well-known journalist. So whenever he is writing an article, his articles are based on some research. Okay, so he some good journalists, they do research. Okay, and on based on that research they
publish articles. Okay, but most of the times some articles in journals, they are not well researched. Okay, they are kind of opinions, or they are kind of judgments. Okay, so they do not have that background, research background. Okay, I'm not talking about all the articles, but some articles. Okay, some articles in journalism, in good newspaper, they are well researched. Okay, but some are not. Okay, so what I was saying about journalistic writing, it means that some researchers, what they do, they are they are passing judgments. Okay, in academics we should not pass judgments. Yeah, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए. Okay, we are not uh, we are not here to pass our opinions. We are here to research. We are here to analyze. Okay, we need to conduct a research, and our writing should be academic. It means it should be based on theory. जर्नलिज्म में जरूरी नहीं कि नेसेसरी थियरी के बेस पे ही आर्गुमेंट्स होंगे, बट इन एकेडमिक्स वी शुड बी theoretically sound. We should take help from the theory, and based on our theoretical understanding, we should connect it with the contemporary issues. Okay, I think I suppose I answered your question. Any other Okay. question? Nikita Mishra, I hope that answers the three questions which you asked, and also Niharika. Uh, any other questions you have, or you want to ask any supplementary questions to the answer which he has given? So we were discussing, Kiran, that as you said, that how to choose a topic, and I think you have already talked about how, for example, you were told to go to the library and look at the sections of the library. I think that is a good enough way to sort of concretize, see your ideas or research in concrete manner. In which broad area you would find yourself researching in. So I hope that I think that the students might give us questions a little late, uh, because some of them were not able to join and the classes are going on. So I think as and when we get questions, we would pass them on to you, and then those can be, the replies can be posted on the YouTube channel, which we have used to host this particular Sure. lecture. Right. Right. So students, I now participants, I now invite Niharika to present the vote of thanks. But before that, I would like to remind two things. One is that Dr. Kiran has already shared with me yesterday itself some useful resources for research. Okay, books and articles he has already shared with me yesterday. So we will be posting that on a Google Drive and giving the link here in the YouTube description box after some time today or tomorrow, so that all of you can have access to some basic readings on research. The second thing is we have already posted a feedback form link in the chat box. So I would urge all of you to give us a feedback on what all did you find useful and what all would you like to host as other programs in the near future. Right? Over to you, Niharika, for the vote of thanks. Hello everyone. Over here, Honorable Resource Person Dr. Kiran Agwane and Dr. Sanjay Jagtap, Principal Arvind Menzies, and all the participants. It is honor for me to have the opportunity to give a vote of thanks in this wonderful online talk. I am Niharika Panchal, studying in second year BA in Abhinav Degree College. On behalf of Political Science Department of Abhinav College, extends a hearty vote of thanks to all delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar outstanding. I extend my thanks to our Honorable Chief Guest, Dr. Kiran Agwane, to take out time for his busy schedule to grace the event. Thank you for inspiring and encouraging us with your words on this special day. A heartfelt thanks to Dr. Sanjay Jagtap, Joint Director
of Higher Education Panvel. And I would also like to appreciate motivation provided by our Abhinav College Principal Alvin Menzies for encouraging and providing the support to make the webinar successful. I extend my gratitude to Professor Amit Singh for providing technical guidance and Professor Dhyaneshwar Bansode for technical support and Sri Santosh Petnarkar for administrative support. I am thankful for the teachers and last but not this least, this kind of amazing programs. We have provided feedback link in comment section. Please fill up. Yeah. So thank you, Kiran, and thank you, everyone. Uh, we hope to host such programs in the near future, which will create interest for research in our students. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, Abhinav Thank you. College and all of them. Thank Thank you you. very much. If students want to connect with me, if they want any ask, if they want to ask any question, then I'll share my email ID with Nitin sir, All right. and they can get it from Nitin sir. All right. So we'll share that ID in the description box of this video. This video will Yeah, be available great. on YouTube. Okay, great. Yeah. Okay, sir. Thank you. Yeah, thank you. So, sir, finally, I am concluding this webinar with our inspired minds and having hope that in coming days we'll get opportunities to attend this kind of amazing programs. Thank you. Okay. All right. Thank you, all of you. Have a good day and bye.